So hello friends, I welcome you all and welcome to my channel. This is Satyam Yadav and this video is going to be about directive principles of the state policy. So I'll be explaining in this video to you all that what are directive principles of the state policy. So without wasting our time, let's start. So directive principles of state policy are enumerated in part 4 of the Constitution from Article 36 to Article 51. Now actually directive principles are mentioned in Article 38 to 51 because Article 36 deals with the definition of state while Article 37 deals with the nature and significance of directive principles. सो डीपीएसपी ऐसा नहीं था कि इट वॉज यूनिकली समथिंग दैट वॉज हमने ही बनाया था बट येस वी हैड अ नोबल आइडिया नाउ इट्स सोर्स इंस्पिरेशन इज दैट इट वॉज that is what is called as instruments of instructions which were issued to the governor general and the governors of the colonies of India by the British government under the Government of India Act 1935. So in other words, these were directions to the government. It is directions to the government to ensure that some kind of fundamental of governance are to be followed. And these DPSPs are borrowed from the Constitution of Ireland and Spain. So DPSPs embodies the concept of welfare state and not a police state. So plan is to make India a welfare state, not a police state. That there should be all the policies, all the reforms, all the laws and all the regulations for the welfare of the people. And a focus is that whether it is directly or indirectly. Now the point here is कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था तो यहाँ आया पार्ट 3 एंड देन जस्ट आफ्टर दैट आया पार्ट 4. तो पार्ट 3 वॉज आर्टिकल 12 to 35, फिर स्टार्ट होता है हमारा आर्टिकल 36 to 51 विच वर आर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स. सो इट इज़ नॉट अ कोइंसिडेंस, इट वॉज ऑल प्लान्ड. एंड व्हाट वाज द प्लान इज कि फंडामेंटल राइट्स are the rights which are guaranteed rights. Okay, they are guaranteed rights because they are justiciable in nature. Citizens and individuals can enforce their fundamental rights through courts against the state. Now DPSPs क्या हैं? DPSPs are just mere directive principles. They are directions, my friends, they are directions, but the important part is these are also your rights. These are your socio-economical rights. Now primarily which starts from article 36 to all the way up to to all the way till article 51. So article 12 से लेकर article 35 तक हमारे guaranteed rights हो जाते हैं and from article 36 to article 51 तक हमारे non-justiciable rights हैं. So in other words these are non-justiciable in nature. इसका मतलब है कि they cannot be enforced an individual against the state through the courts. मतलब एक individual कोर्ट्स के अगेंस्ट स्टेट के अगेंस्ट ये राइट्स इन्फोर्स नहीं करा सकता है थ्रू द कोर्ट्स. सो नेवरदलेस कॉन्स्टिट्यूशन ने यहाँ पे क्या कहा, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 37 itself says that these principles are fundamental in the governance of the country and it shall be the duty of the state to apply these principles in making laws. So DPSPs के अगेंस्ट तो हम लॉज ला नहीं सकते, तो इंश्योर करो कि DPSP के जो प्रिंसिपल्स हम फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं लॉ बनाते टाइम, क्योंकि ये प्रिंसिपल्स फॉलो किए जाने चाहिए बिकॉज आवर एम इज़ टू मेक अ वेलफेयर स्टेट. सो जनरली देयर आर 3 principles on the basis of which DPSPs are made. First socialistic, then Gandhian and then liberal intellectuals. So let's begin with socialist principles. These principles reflect the ideology of socialism which consists of social, economical and political justice. So the first and foremost article is article 38 in this socialist principles which talks about social order, justice socially, economically and politically. So to promote the welfare of the people by securing a social order permeated by justice which is socially, economically and politically. So justice is paramount because justice is very important part of a welfare state. It is everyone is expecting social, economical and political justice. फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं इक्वल पे एंड इक्वल वर्क इज अ जस्टिस, है ना, कि बोथ मैन एंड वुमेन बोथ ऑफ देम आर इक्वली पुटिंग इन द इक्वल अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क. व्हाई आर यू गिविंग समबडी एक्स्ट्रा मनी एंड समबडी लेस? सो इट इज जस्टिस. सो सिमिलरली उसी तरह इफ यू लुक एट द जस्टिस
रिजर्वेशन की जब बात होती है तो रिजर्वेशन इज अ टाइप ऑफ जस्टिस. ओके, देयर वुड बी 22.5% ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स पॉपुलेशन विच हैव बीन लेफ्ट फार बिहाइंड. तो उनको हम रिजर्वेशन देते हैं. सो वी आर ब्रिंगिंग देम टू इक्वालिटी माई फ्रेंड्स. इक्वल लेवल पे लाया जा रहा है उनको. वी आर प्रोवाइडिंग देम अ लेवल प्लेइंग फील्ड. सो इट इज़ अ टाइप ऑफ जस्टिस. ऑलराइट, उसी तरह से if I don't do exploitation, etc., etc., it is all justice. So justice was a paramount importance in the world of welfare states. So DPSPs में अगर हम देखते हैं तो justice is of paramount. So justice, however, can be social, it can be economical, and it can be political. Now comes the next article, Article 39. Article 39, if you look at the Article 39, it is a broad article. In other words, that men and women will be treated equally. Then there will be no state, no person shall have monopolization or concentration of wealth. We will distribute the resources equally. Then 39, then comes our Article 39E and 39F. 39E and F were added when 39E says that preservation of health and strength of workers and children against forceful abuse. सो जस्ट बिकॉज कि किसी की इकोनॉमिक रीजंस हैं माय फ्रेंड्स, अ वेरी मेजर रियलिटी इन लाइफ इज कि सबको हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा. एवरीवन हैज़ टू अर्न हिज लाइवलीहुड्स, बट द स्टेट इज़ वेलफेयर. तो हमारा स्टेट क्या है? वेलफेयर स्टेट है. तो भाई हम तुम्हें इतना काम नहीं कराएंगे कि तुम्हारी लाइफ ही ख़त्म हो जाए उससे, या तुम्हारी हेल्थ इरिपेरेबल डैमेज हो जाए. नो. सो दैट इज़ आर्टिकल 39E. उसी तरह से आर्टिकल 39F है. प्लीज अंडरस्टैंड दिस कि एक्चुअली 39F इज राइट टू चाइल्डहुड. राइट टू चाइल्डहुड के बारे में बताया गया. सो देन वी हैव आवर आर्टिकल 39A. 39A इट वाज लेटर एडेड बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1976. सो टू प्रोवाइड इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर. सो वी हैड ब्रिंग दिस पर्टिकुलर आर्टिकल. ये क्या करता है हमारा? ये इक्वालिटी प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि अब ऐसा तो है नहीं कि दैट वन पर्सन इज़ रिच एंड बिकॉज ऑफ हिज रिचनेस ही उसको क्या हो रहा है, वहाँ पे जस्टिस दिया जा रहा है, ठीक है, और अनदर पर्सन इज़ अ पुअर पर्सन जिसकी वजह से ना तो उसके पास एक्सेस है टू द लॉस, वो अपने लिए एक अच्छा वकील हायर नहीं कर पा रहा है. सो ये सारी चीज़ें देखते हुए तो वी थॉट कि वाई डोंट वी ब्रिंग देम टू अन इक्वल पोजिशंस. यहाँ पे हमने क्या किया, पुअर और रिच के बीच में इक्वालिटी ला दी बाय ब्रिंगिंग अप दिस आर्टिकल that we are providing just free legal aid to the poor. Then comes our article 41, 42 and 43A. These are related to the rights of work. So 42 जो है वो provisions for just and humane conditions of work के बारे में बात करता है and maternity leaves के बारे में बात करता है. Then comes the article 43. 43 talks about securing लिविंग वेजेस, अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ होना चाहिए. एंड 43A टू टेक स्टेप्स टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज. लाइक ट्रेड यूनियंस हैं हमारे, वो भी मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज करते हैं. सो लाइक दिस ओनली. सो आर्टिकल 47 क्या करता है? टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल एंड टू इम्प्रूव द पब्लिक हेल्थ. नाउ कम्स आर गांधीयन प्रिंसिपल. सो इट इज़ ऑफ वेरी पैरामाउंट इंपॉर्टेंस. हमारा आर्टिकल जो 40 है वो कहता है कि स्टेट शुड ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत्स, एंड्यू देम विद नेसेसरी पावर्स एंड अथॉरिटीज़ टू इनेबल देम अ फंक्शन ऑफ यूनिट्स ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट. सो यहाँ पे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स की बात हो रही है, ग्राम स्वराज मॉडल की बात हो रही है जो कि हमारे गांधी जी ने सोचा था. तो कोर्ट्स, तो उनको सबको लाने की बात हो रही है. Now comes our 46, Article 46, which deals with the reservation of scheduled caste and scheduled tribes and other weaker sections of the society. यहाँ पे other weaker sections of the society का आ गया है. So in education and economic interest and to protect them from social injustice and exploitation, Article 46 specifically talks about that. Now comes Article 47. Article 47 allows the state to prohibit the use of substances which are called as intoxicants, drugs, drinks, etc., which are injurious to health.